हेलो टीचर्स, ट्रिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद अपने मित्रों को भी शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि हमारे इस चैनल के नए नए अपडेट्स आपको हमेशा मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से NIOS के प्रैक्टिकल कोर्स जो 511 है स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, उसका तीसरा भाग कंट्रीब्यूशन टू स्कूल प्रोग्राम का जो चौथा पार्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स एंड एनुअल डे ऑफ द स्कूल के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आइए जो एनुअल स्पोर्ट्स एनुअल डे क्या है इसके बारे में मैं थोड़ी बता देता हूँ। वार्षिक दिवस या विद्यालय वार्षिक दिवस या विद्यालय जो क्रीड़ा दिवस होती है उसे प्रत्येक विद्यालय में आयोजित की जाती है और उसके अंत में उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। किस प्रकार आप उसका आयोजन करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, 511 स्कूल बेस्ड एक्टिविटी का तृतीय भाग, 511 का 3 कंट्रीब्यूशन टू स्कूल प्रोग्राम और 511 3 का 4 यानी चौथा भाग या कंट्रीब्यूशन ऑफ टू स्कूल प्रोग्राम का चौथा भाग है। देखिए, नाम उसी तरह से आपको नाम लिखना है, आपको टीचर्स नेम देने हैं, इनरोलमेंट नंबर देना है और स्कूल का नाम और एड्रेस देना है। यहाँ मैं एड्रेस नहीं दिया हूँ, स्कूल का आपको एड्रेस दे देना है। मैं इन दोनों में से एनुअल स्पोर्ट्स एनुअल डे के बारे में मैं किसी एक के बारे में कर रहा हूँ। आज मैं एनुअल स्पोर्ट्स के बारे में बताऊँगा। इन दोनों में से किसी एक करना है। एनुअल स्पोर्ट्स में देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिपरेटरी एक्टिविटी फॉर कंडक्टिंग द एनुअल स्पोर्ट्स और एनुअल डे। आपको एनुअल डे के ऑप्शन को लिखना नहीं है। Annual Sports Day is an important event in the life of every school. Sports themselves have a vital role in making a child should physical as well as mentally. The annual Sports Day was held on 5th of November 2017. It was held in the playground of our school. Our principal Mr. M.K. Kumar was the chief guest. The whole playground has been decorated with flags, bunting and the balloons in a day earlier. The sports day began with the welcome speech by the in charge of the school, followed by the march past by class of all students. किस प्रकार एनुअल स्पोर्ट्स एनुअल ऑर्गेनाइज की जाती है इसके बारे में आपको देना है। द चीफ गेस्ट टुक द सैल्यूट एंड देन ओथ सेरेमनी वॉज हेल्ड। द इवेंट वॉज फॉलोड बाय द होस्टिंग ऑफ फ्लैग बाय आवर एस्टिमेट चेयरमैन, our headmaster, who declared the sports meet open. Later, a melodious song was sung by a group of students and then an entertaining umbrella dance by class 4 students were performed. After that, the class 3 students participated in 100-meter race, filling and buckets and 3 legged rest. The children who stood first were given medal. Yoga and formation of pyramids by class 3 student. Drill of dumbbells was done by class 4 student, followed by 100 to 200 relay race and tug of war by the same class. The students were given the medal accordingly. After that, the class 5 100-meter relay race and hurdle were done, followed by the medal ceremony of the event. ये डिस्क्रिप्शन आपका जो है स्पोर्ट्स का है। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंडक्टिंग ऑफ द एनुअल स्पोर्ट्स। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ लिखना है। आपके एनुअल स्पोर्ट्स के जो ऑब्जेक्टिव है उसे लिखना है।
To develop physical fitness by maintaining and increasing such a component of speed, flexibility, muscular strength, muscular endurance, aerobic capacity and anaerobic capacity, etc. To develop physical literacy through acquisition of those level of skill necessary for efficient body movement and control in a sporting situation. Third number, to develop an understanding of the importance of sports in the pursuit of a healthy and active lifestyle at the college and beyond. And school, यहाँ school भी कर सकते हैं. To provide the opportunity to be inventive and creative in sporting activities. Fifth, to promote an awareness of and an ability to appreciate the aesthetic quality of sporting performance and movement. Seventh, to develop an appreciation of the concept of the fair play, honest competition and good sportsmanship. Eighth, to develop the capacity to maintain interest in a sports or sports and to preserve in order to achieve success. 9, to prepare each student to be able to participate fully in the competitive. आपको इतनी देने की जरूरत नहीं है, कुछ आप 5-7 भी देखिए, आप अपना रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं. 13 देखिए, to provide a release for pupils in order to refresh for academic work. Last देखिए 17, to provide opportunity for pupils to excel at sports. ये रहे ऑब्जेक्टिव. आपको ऑब्जेक्टिव क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको देना है. नेक्स्ट देखिए, स्टेप टेकन फॉर कंडक्टिंग द एनुअल स्पोर्ट्स इन द स्कूल. एनुअल डे को आपको काट देना है. It is that time of year again where the end of summer term draws near and it's time to talk about saying goodbye to another great school year. Before you do, however, there are all the end of term activities to get through. One of the more enjoyable tasks that primary school teachers face are organizing the summer sports day. अब समर दे सकते हैं, विंटर दे सकते हैं. मैंने विंटर का ही दिया है, लेकिन यहाँ समर के बारे में भी लिख दिया है. स्पोर्ट्स डे इन ए प्राइमरी स्कूल इज मार्केडली डिफरेंट टू स्पोर्ट्स डे इन सेकेंडरी स्कूल. इट इज़ मच अबाउट joining in and having fun as it is about competence, teamness and winning. The activities, races and games are likely to include simplified fun version of track and field event, though still of course involving physical extension and skill. Done right, a sports day is the perfect way to wrap up the school year and send both children and parents off on a positive note, so it is important to try and get it right. While the while the thought of organization school report day may feel like just another core on your seemingly endless list of things to do, since it's National School Sports Week from the 26th to 30 June, now is the perfect time to get planning. आपको ये सब टाइम अपने आप में चेंज करना है. और देखिए, प्रोसीड्यूर ऑफ कंडक्टिंग एनुअल स्पोर्ट्स स्टेप बाय, इसमें कुछ स्टेप बाय दिया. प्राइमरी स्कूल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइजेशन. Stay organized. The preparing everything in good time is the best thing you can do to help stay calm and in control when it come to preparing your school sports day. Second point देखिए, set a time and date to make sure both pupils and parents are there. ये सब क्या इस प्रोसीड्यूर्स करने हैं. Get a date in the diary well in advance and make sure that parents are aware of it so they can make arrangements to attend. थर्ड देखिए, start to plan what games you include
and timetable for the event. Timing is everything when it comes to ensuring the day runs smoothly. Think about how long you want to last, which events you will have, and how long each will take. Don't forget to factor in break decides whether you will present winners with prize at the end of each race, or have a prize giving ceremony at the end of the day. Think about what equipment you will need. You can't win sack race without the sacks, or not. You can have a prize giving ceremony without any prize. Once you have made your plan, make sure you will have all the equipment and material you need to put your ideas into practice. They give problems encounter for conducting the annual sports. When you are planning an event, especially in a school, there are so many problems moving as a part when it comes to successful pulling it. 5 मेजर मैंने 5 मेजर दिया है, आप लोग इससे भी और ज़्यादा देख सकते हैं. 5 मेजर प्रॉब्लम्स इनकाउंटर फॉर कंडक्टिंग एनुअल स्पोर्ट्स. Overspending, not having enough money. Second, running out of the time. Third, not according for the little things. Fourth number, choosing the right venue. And fifth, being memorable. तो ये हमारा प्रॉब्लम्स थे. Solution in ways रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम्स. आपको यहाँ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इंडिकेट करना है. द बिगेस्ट and the only real problem is of finance. Genuinely speaking, most of the fest don't have much to offer in terms of advertising, and the companies have learned that it can be extremely hard to justify and acquire the required amount of money. Second time, the most of the time people starts get serious about their events pretty late. This is not only means less time for the planning and executions of the event, but also lesser time for acquiring the requisite sponsorship. Pending tasks grow, and the last few days are always spent in shit load of work. Also, the reduced time makes the already hard tasks of gathering resources even harder. It is important to have a time work sheet which is strictly followed. Third, a good team. Fourth, देखिए लास्टली देखिए एक और देखिए अ गुड ऑर्गेनाइजर एंड लीडर. आपके बारे में भी दिखना है. देखिए if the organizer of the event has enough skill and motivation, he can drive his or her team through all the hindrances about, and what you will be left with a memorable successful event. So if you are thinking of organizing an event, make sure you have enough motivation, you know your way with people, or you have somebody in your team who can do this. This will not only help you sweet talks sponsors in giving you money, but will also help you keep your team motivated and the work moving forward. Lastly, the impact of the annual sports on the school environment. The aim of the present day was to examine the differences in intrinsic motivations, perceived learning environment, and the perceived teachers' feedback with the respect to physical education of students who participate in after school sports and students who do not. School students aged 12-15 years responded to the intrinsic motivation inventory. To access intrinsic motivation, physical education learning environment is skill to measure the perception of the learning moment environment and perception of the teacher's feedback to assess the perceived teacher's feedback. Furthermore, both male and female students with sports experience felt the physical education learning environment to be more non-threatening to their self-esteem than students without a sports experience. Moreover, the female students
with sports experience perceived significantly more that their teacher provides them with a positive general feedback than their schoolmates without sports experiences. तो रहा इस प्रकार एनुअल डे के बारे में, आप एक तो किस प्रकार एनुअल डे को ऑर्गेनाइज किए हैं उसके बारे में देना है। और लास्टली देखिए सिग्नेचर ऑफ द टीचर ट्रेनिंग या ट्रेनिंग टीचर के बारे में देना है। काउंटर सिग्नेचर ऑफ द हेड मास्टर विथ ऑफिशियल सील, हेड मास्टर में डी गायब है, इसे आपको ठीक करना है। सिग्नेचर ऑफ मेंटर एंड सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर, इस प्रकार आपको देखिए करना है। सिग्नेचर ऑफ द हेड ट्रेनिंग टीचर, काउंटर सिग्नेचर ऑफ द हेड मास्टर विथ ऑफिशियल सील, सिग्नेचर ऑफ मेंटर एंड सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर। सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर में देखिए हेड मास्टर में डी आपका गायब है, कहीं खो गया है उसे आपको ठीक से लिख लेना है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, आप जितने लाइक करेंगे हमें उतना ही उत्साह बढ़ेगा, हमारे वीडियो बनाने में उत्साहित उतना ही होऊंगा। शेयर करें, कमेंट करें, अपने मित्रों को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।